guys, welcome back to my channel. Today we are going, I'm going to the most awaited layover, which is Kathmandu, Nepal. I've been waiting to do this layover since November. It's not that I didn't get this layover, but there's a place where I would love to visit, and I have been thinking about it since a very long time. And on this layover, finally I have decided we are going there. So I just have 20 minutes to report, so I'm gonna go quickly inside, do everything, reach Nepal, and then get back to you all. We are in Kathmandu. This is the bathroom. Me, my bags. It's a very small room. Here we go. What do we have in here? And let's see what's there. Oh my god, the view is insane. Do you see this? Beautiful. Look at the greenery. Look at the city. And oh my god, we have a mountain there. Oh, this is beautiful, beautiful. I am super duper happy. Look at the room. Look at this amazing thing over here. Or fir ye. And then this. I'm getting easily distracted. And look at this. I love the view. Can I switch? No, I have already switched in. It's beautiful. It is beautiful. This is the month of Ramadan going on right now. I'm sure जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी रमादान ख़त्म हो चुका होगा, ईद ख़त्म हो चुका होगा, बिकॉज इसके पहले मुझे 2 और वीडियोस डालने हैं जो मैंने अभी तक डाले नहीं है, बिकॉज आई यूजुअली कीप गैप ऑफ लाइक से 15 to 20 days की एक वीडियो चले. एंड इतने सारे लेओवर्स में भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज द होल मंथ ऑफ रमादान आई हैव बीन फास्टिंग. और फास्टिंग के टाइम आई अवॉइड डूइंग लेओवर्स. आई प्रेफर डूइंग ऑल नाइट फ्लाइट्स ताकि पूरा दिन आई कैन फास्ट एंड देन रात को शाम को आई कैन डू माई इफ्तार एंड देन गो ऑन द फ्लाइट फ्रेश. लाइक फास्ट करके आई कैन नॉट. राइट नाउ आई एम फास्टिंग but still I'm so active. Do you want to know why? Because I've been waiting to do a Kathmandu layover since so long, since 4 months, and I've been waiting to visit this beautiful temple over here, the Shakti Peeth over here, which is Guheshwari temple, and right next to it is Pashupatinath temple. Please Google about the importance of the power of importance of Pashupatinath temple, the story behind it. It's so beautiful. And of course the Shakti Peeth. I am from Assam, India, where we have Kamakhya Devi temple, which is also a Shakti Peeth, which I always wanted to visit, but कुछ ना कुछ reason की वजह से मैं नहीं कर पाई. But holy month of Ramadan, I'm fasting and I get to visit Guheshwari temple. I have been wanting to visit this temple since November. पता नहीं मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मुझे visit करना है. And finally now I got this layover after I have been requesting this layover since so long. Last month भी मुझे ये layover मिला था, but the flight got cancelled because of something. But yeah, I'm super excited right now. I'm gonna shower quickly क्योंकि I'm gonna shower and then get a cab and then go and see the temple. First I'll go to the Shakti Peeth and then I will go to Pashupatinath temple. I'm not really sure कि मैं वहाँ पे record कर पाऊँगी, इतना बक पाऊँगी कि नहीं, because I don't know if there are restrictions or not, but I'll try and record. And मुझे वहाँ पे बैठ के माहौल भी देखना है and everything. Like it must be divine, right? Alright, without wasting any more of my energy, let's get ready and keep going. It's already like 10 in the morning over here और मुझे 12 से पहले I want to be there, finish darshan by like 1 o'clock और फिर दोनों temple के दर्शन करने and then I come back and then कुछ time बाद I can have my iftar.
Today unfortunately I'm not going to the market क्योंकि ये बहुत opposite direction में हो जाएगा. Maybe on my next layover because I have something जो मैंने market में दिया हुआ है for stitching. यहाँ के कपड़े बड़े खूबसूरत है जो इंडिया से आते हैं and I don't get India layovers, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से खरीद लेती हूँ. कुछ सिलवाने के लिए दिया था मैंने और 4 महीने से मैंने कलेक्ट नहीं किया है. I added the tailor who's a girl on my TikTok on my Instagram, so she knows. तो मैं आराम से जब this darshan was very important and of course in this month, wow, सोने पे सुहागा types हो गया. So amazing. 10,000 साल बाद मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए पशुपतिनाथ टेम्पल. अब मुझे जाना है. मेरी एनर्जी आप देख सकते हो, एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है मेरी. अब मुझे नीचे जाना है, करेंसी एक्सचेंज करना है. माई आईज आर टर्निंग लिटरली रेड एज यू कैन सी. वेन्स दिख रहा है बिकॉज आई हैवंट स्लेप्ट. कल रात को जगी थी मैं, पूरी रात का मैंने फ़्लाइट किया और फिर नाउ शायद से आई विल गो टू द टेम्पल. वहाँ से प्रसाद वगैरह लूँगी, व्हाटएवर, दर्शन करूँगी. देन मेरा जब फास्ट ब्रेक का टाइम हो जाएगा, इफ़्तार टाइम, तो मैं शायद बाहर ही कहीं इफ़्तार करूँगी या फिर यहाँ पे ही आके इफ़्तार करूँगी. आई हैव नो आइडिया. एंड फिर आई विल गो टू स्लीप. सो बेसिकली नींद बहुत कम मिलने वाली है आज मुझे और मेरी एनर्जी इस वजह से हो चुकी है डाउन. मेरा रूम थोड़ा सा मेस्ड है. इट्स फाइन. और वेयरिंग ब्रिंजल, इंडियन कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. इंडियन कपड़े पहन के झुमका पहन के बहुत अच्छा लग रहा है. इंडिया में जब मैं थी तो मैं इतना ज़्यादा इंडियन तो नहीं पहनती थी, बट अभी इट्स लाइक अ प्लेजर टू वेयर इंडियन. इतना अच्छा लगता है मुझे पहन के. मतलब अगर ये वाला डिज़ाइन अगर मेरी माँ ने देख लिया, मुझे छमिया डिक्लेयर कर देगी मेरी मम्मी. बट ये छमिया कपड़ा पहनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई एम प्राउड जब भी मैं अपनी इंडियन कपड़े पहनती हूँ, जो भी कलर के. बिकॉज मेरी मम्मी ये कलर देखने के बाद कुछ तो ऐसा घटिया सा कमेंट करेगी जो यूट्यूब पे नहीं करेगी, लेकिन फ़ोन करके मुझे कुछ गंदा सा बोलने वाली. हमारी इंडियन मॉम्स बड़ी सही होती है. बचपन से हमको इतना बुली हमारी मम्मियों ने ही किया हुआ होता है और चमड़ी इतनी हमारी क्रोकोडाइल टाइप बन चुकी है कि अगर आता जाता इंसान कुछ भी हमको बोल देना, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो अब मेरी मम्मी क्या बोलती है, देखो, आई हैव फ्रैकल्स ओवर हियर. ये शादी नहीं होगा तुम्हारा. ये दाग दफों से तुम्हारा शादी नहीं होगा. अल्लाह, मतलब क्या बताओ. ओ गॉड. एनीवे, आई एम श्योर हर कोई रिलेट कर ही सकता है. आई मीन अभी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ झगड़ा करने मत लग जाना. हमारी मम्मी तो हमको राजकुमारी जैसा रहता. पता है देसी मम्मियाँ कैसी होती है, सबको पता है, सबको पता है. शायद से आगे जाके मैं भी मम्मी बनूंगी. नहीं, मैं बुली तो ज़रूर करूँगी मैं यार. बदला लेना तो बनता है ना. मम्मी से आया है तो मेरे बच्चों में भी हो जाए. आई डोंट नो. बहुत जल्दी कमेंट कर रही हूँ मैं, बहुत बकवास कर रही हूँ. आई नीड टू लीव नाउ. I found a very nice lady. I did some currency exchange. Now we are, me. I'm in the car and I'm on the way. I'm super excited. This is the first time I stepped out in Nepal all by myself. Super safe to go out. And people are very kind, very, very nice actually. And this is how it looks. I wish it was not actually Ramadan, but I mean the food over here is amazing. Of course I'm gonna have iftar outside. At first I was thinking I'll have it in the hotel, but no. I'm gonna sit somewhere outside and have whatever food and then come back. Alright, I'll reach there and I will show you guys. नींद आ रही है.
बहुत टाइम बाद हुआ है जिसमें आई एम नॉट ड्राइविंग, somebody else is driving और मैं पीछे बैठी हुई हूँ. आई स्वेयर मुझे बहुत ही डेंजरस वाला नींद आ रहा है. बहुत ही ज़्यादा. बहुत ही ऐसा हिली रोड है. अच्छा लग रहा है but at the same time I'm so tired कि मुझे नींद आ रहा है. Hopefully दर्शन अच्छे से हो जाए बस. आ चुकी हूँ मैं शक्ति पीठ टेम्पल पे. आई कांट बिलीव दिस एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि इसके बाद मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट मे बी आई पुट सम पिक्चर्स क्योंकि मुझे दर्शन करने हैं. मैंने ये ले लिया है. दिस इज द टेम्पल. ब्यूटीफुल. शक्तिपीठ का दर्शन तो मैं कर चुकी हूँ. देयर वाज नो फोटोग्राफी अलाउड इनसाइड, सो मैं ऐसा कुछ खींच नहीं पाई. सो यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल, विच इज आई थिंक इट्स ऑन वॉकिंग डिस्टेंस. तो मुझे सीधा सीधा चल के जाना है. अपेरेंटली 2 बजे बंद हो जाता है. सो आई ट्राई एंड मेक इट before 2 o'clock, and there are a lot of monkeys over here. शिवलिंग तो बचते बचाते जाना पड़ेगा मुझे. Alright. Finally I've come to the area where there is the growing shivling, but the only problem is I think it's closed. How beautiful this is. Darshan was amazing. I couldn't click any pictures inside because apparently it's not allowed. And पशुपतिनाथ जी के अंदर वाला जो है वो नहीं मैं शूट कर पाई because they close it by like 2 o'clock and it opens by 5, and I don't have that much time to wait till 5. It's barely like 3 o'clock. I sat with the Pandit ji and we spoke a lot. Brings you some kind of peace which I can't explain. I think I needed this so much, and this place is beautiful. Right now I'm gonna head back to the hotel. Yeah. Darshan was amazing, but at the end वो जो हाथ दिखाते हैं ना, मैंने उनको अब गलती से अपना हाथ दिखा दिया. Oh my god, my kajal is like dripping. और मेरा दिमाग खराब हो गया. I don't know why I did this to myself. Like, oh my god. Anyway, if you ever come over here, don't show your hand. This is what I would suggest because I mean, this is my experience. मुझे अच्छा नहीं लगा, and I'm quite tired because, as I said before, I woke up कल रात को पूरी रात, and then now I operated a flight whole night or pura din darshan, and now I'm going back to the hotel. I was thinking to go to Tamil and break my fast, but I'm not gonna do that. I'm so tired to actually go there, have food and catch another taxi and then go back to the hotel. I do not have that much energy, so I'm just gonna go back to the hotel and have iftar there and just sleep. I need sleep. Like, my energy is zero right now. But darshan was amazing. I loved it. I think I need to come one more time because I know the timings right now. Like, देवी के दर्शन तो हो गए, लेकिन पशुपति टेम्पल was closed. Like, आरती के बाद they close it, भोग के बाद they close it, and they open at 5 in the evening, and I didn't have that much energy to stay. I am back and I'm extremely tired. Look at my face. Extremely tired. It was amazing experience. I mean, I have been wanting to go there for very long. You don't need a ticket. You enter either from Pashupatinath or you enter from
uh, Guheshwar. It's up to you. I entered from Guheshwar and then I walked all the way up and then I went to Pashupati. Before entering Pashupati, you have these series of small mandirs where you get to see the Shivalinga, you get to see uh, what do you call it, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है. There are spots जहाँ पर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे meanings है which I'm not the right person to talk about it because I don't have that much information, but it's beautiful. You need a guide who will explain you about all this. But मुझे like there were a lot of people who were taking photographs and everything, so I thought it was photographic spot. So when I moved and I went to Pashupatinath and I sat with the Pandit ji and he explained me about everything कि कहाँ पर शिव जी ने शक्ति माता की बॉडी को कैसे पकड़ा हुआ था, किस तरीके से पकड़ा था, कैसे आके गिरा. Like he gave me a lot of detailed explanation about the whole thing, and it was beautiful actually, very nice. Like I sat with him for 2 hours, literally 2 hours, and he explained me a lot of things which is I can't cover in this. Like he even gave me a छोटा mantra which जिसका मैं जाप डेली कर सकती हूँ, which will give you peace and all that. तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. It's 6 o'clock in the evening. I still have 20 minutes before I break my fast. Basically, I have my iftar. I would love to record my iftar, but I am so tired. I am so tired. But this is peace. This is peaceful. एक चीज़ है यहाँ पर, people are so nice कि मुझे अकेले यहाँ से वहाँ घूमने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई. या they kind of find it a little bit fascinating or weird कि मैं अकेले घूम रही हूँ. They were asking, you don't have family, you don't have this, that. I was like, yeah, whatever. But it's quite safe. I don't know in the night, but मैंने एक Uber टाइप का एक ऐप डाउनलोड कर लिया था होटल वालों से पूछ के, and then I had like लोकल करेंसी यहाँ पे कहीं भी एक्सचेंज मिल जाता है. मैंने एक्सचेंज करवा लिया. द एक्सचेंज लेडी हेल्प मी विद द टैक्सी. मैंने बुक की और मैं पहुँच गई. इट वॉज क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल इन फैक्ट, एंड इट्स वेरी सेफ टू एक्चुअली वॉक अराउंड एवरीवेयर. You see a lot of foreigners when you go to this market. It's called Tamil, where there are a lot of restaurants and everything. But today I was so tired. I thought after Pashupatinath I will go to Tamil and maybe I'll break my fast over there. But it involved a lot of walking. Plus I'm fasting, so I didn't have the energy to go to Tamil, choose a restaurant, order food, have, and then come back. I didn't have no energy. I was like, oh, let me just pack something and I'll have it in the hotel room. Good morning, everyone. It's 6 in the morning. I got up at around 1 o'clock when they delivered my food for Sohar for fasting. मैंने वो record नहीं किया क्योंकि what's the need, right? They gave me chicken and rice, which is there. The gravy was so less, so I just had a little bit, thoda sa. And I went back to sleep, and the actual time of fasting started. Nepal time was 4:39, so I got up by 4:30 again, and I drank a little bit of water. Kept the water far away there so that I accidentally don't drink it because I'm traveling and I kind of forget. And the wake-up call is in 30 minutes. Usually I get up thoda jaldi कि मैं चाय पी लूँ, ये पी लूँ, वो पी लूँ, but अभी ऐसा कुछ है नहीं. I hate morning flights. I personally got up so that I can pack my bag. So let's get ready and fly back to Dubai. And I'm back to Dubai with my cats. एक यहाँ पे मेरे गोद में बैठा है और दूसरा वहाँ विंडो पे बैठी हुई है. Thank you so much if you watched this video,
It has been an exhausting day because usually fasting, I mean Ramadan ke pura time pe I prefer doing all night flights. I know, all night flights, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद एनर्जी आती है फ़्लाइट करने के लिए. बट आज डे फ्लाइट थी और मैं सीरियसली थक गई हूँ. आई थिंक मैं लग भी रही हूँ थकी हुई. And yeah, once again, thank you so much for watching. If you watched till the end, and if you like, please like this video, share and subscribe. And I will see you next time in the next video. ये इंसान I mean ये बिल्ला पगला गया है. Yeah, look at him. Anyways, see you next time. Bye. Say bye.